So, welcome to Gopal online YouTube channel. So, today's session is for class 12th, subject biology, principle of inheritance. So, this is part 2, and I am G.R. Chopde, PGT biology, JNV Sangli. So, before this, we have discussed that is Mendelian principles, law of dominance, and law of segregation. Now, how, and also we have seen why the Mendel is not famous. Then who rediscovered the Mendel? Now, we are now discussing deviation from the Mendelian result. See, after rediscovery of laws by performing many experiments, so all these are called post-Mendelism or neo-Mendelian genetics. Neo-Mendelian genetics. In that, there is an incomplete dominance where the ratio will get 1:2:1. Yeah, codominance, again the ratio is 1:2:1. Yeah, multiple alleles or pleiotropy, that is 2:1. Yeah, polygenic inheritance, that is 1:4:6:4:1 like that, or 1:6:15:20, whatever it is. Now here after Mendel, the gene interaction, what the Mendel said, one gene interaction, two gene interaction. But here there is an intragenic that is occur between alleles of same gene, what you have discussed, tall and dwarf. Intergenic, that is occurs between the alleles of a different gene. See, now if you see a incomplete dominance, if you see here a incomplete dominance, the best example is snapdragon. Here the parent are red flower and white color flower. See again, red capital RR is a small RR. So red is dominant over white here. So again they will produce, that is law of segregation, two gametes, that is one is containing R, another is containing small r. In F1 generation, see as a law of dominance, all are pink color. So here law of dominance is applicable. But when the F1 generation plants are allowed to self-pollinate, again by using the Punnett square, if you observe, so two types of gametes, capital R, small r. So here we got the phenotypic ratio and the genotypic ratio same, dono barabar mile. See phenotypic red and white, but we got another intermediate color, that is pink. So from this we can say, okay, so here red is not dominant over white. So therefore in F1 we got pink color instead of red color. So this is, the red is not completely dominant over white. And that is white is again expressed and red is also expressed. So both ratios are same. So this is snapdragon flower. Yeah, you can see the one more illustration now. So that kind is called a incomplete dominance. Now what is here a incomplete dominance? The inheritance of flower color in the dog flower, yes, snapdragon or antirrhinum species. Another example is Mirabilis jalapa, that is Gulab Nasi or 4 o'clock plant, studied by the Carl Correns. In a cross between the true breeding red flowered, that is capital RR, and a true breeding white flower, that is homozygous. So in F1 they got a pink, that is heterozygous, pink, not red, as per law of dominance according to Mendel. When the F1 plant was self-pollinated, the F2 resulted in the following ratio, that is 1 capital RR, that is red out of 4, 2 pink, that is capital R small r heterozygous, and 1 that is homozygous, a pure small rr white. So the genotype ratios like monohybrid cross, that is 1:2:1, but the phenotypic ratio is also 1:2:1
instead of 3:1. So what happened? So here what happened to that? That R was not completely dominant over small r, and this made it possible to distinguish capital R small r as a pink from capital R, that is red. Okay. Now, from this we can now discuss what is dominance. A gene that contains the information for producing an enzyme. Okay, so one gene, one enzyme. So that we'll discuss in next chapter. Now there are two copies of this gene. Yeah, the two allelic forms, that is capital R, small r. Yeah, capital T, small t. Now let us assume, that is very common, that the normal allele produce the normal enzyme, that is capital T produce enzyme that is needed for the transformation of some chemical substances into product. Okay, yes, into product. So अगर theoretically आप सोचेंगे, the modified allele एक और normal, अभी modified allele अगर modified है could be responsible for the production of एक तो normal या less efficient enzyme or a non-functional enzyme or the no enzyme at all. बिल्कुल एंजाइम भी नया तैयार नहीं करेगा. Okay. Now, sometime a single gene product may produce more than one effect. एक gene, many effects. Take example. Starch synthesis in a pea seeds. Starch synthesis in pea seeds is controlled by a one gene. So it has two alleles, capital B and small b. Okay, this is capital T, small t. Now starch is synthesized very effectively and more starch will be produced if the genotype is capital BB and large, more starch, so the large starch grains are produced because of more storage. Then pure homozygous small bb have lesser efficiency क्योंकि altered gene है. So efficiency in starch synthesis is very less. So therefore less starch is produced, less starch will get deposited and smaller starch grains are produced. Okay. Abhi, after maturation of seeds, that is capital BB seeds are round and small bb seeds are wrinkled. But the capital B small b, that is heterozygous, produce round seeds. And so B seems to be the dominant allele क्योंकि इधर भी ज्यादा तैयार होगा. But in starch grain production are intermediate size, that is capital B small b का जो seeds है वो intermediate, not larger starch grains या not smaller starch grains. So if the starch grain size is considered as the phenotype, then from this angle हम क्या सोच सकते हैं, the allele show incomplete dominance क्योंकि capital BB large starch grain, capital B small b intermediate starch grain और small bb that is small starch grain. Okay, ऐसा भी हो सकता है. Now come to the second is codominance. What is codominance? In codominance, the genes of a allelomorphic pair are not related as a dominant and recessive, but both of them express themselves equally yet together in F1 hybrid. No one is dominant, but together they will come and express themselves equally, and that is codominance. These follow the law of segregation. Law of segregation is universal. Okay, but law of dominance is not universal. Mendel में वो लागू हुआ, लेकिन स्नैपड्रैगन में लागू नहीं हुआ. So it is called incomplete dominance. अभी इधर भी वो लागू नहीं होता है, not applicable. So codominance. Here F2 progeny again exhibits 1:2:1. Now we will take an example of
ए कोट कलर या स्किन कलर जिसको हम बोलेंगे कलर, okay, so we will consider that is coat color, that is skin with hair in a short horn cattle. Now parents देखो इधर red है इधर white है, so capital RR, small that is capital WW. Now both are capital now, not red is dominant, yeah, white is dominant over red. So when the gametes are again fused, so we get a, that is roan color. See that this is white, this is red, but here you can see 50-50. In F1 generation, when they are again cross या self आप बोलेंगे, so here according to checkerboard, see red, roan or white. Red 1 out of 4, roan 2 out of 4, and white 1 out of 4. So 1:2:1. Now, so there are two types, one with a red and other with a white coat. On crossbreeding, the individuals of F1 are roan color, that is RW. So here roan is a mixture of red and white. Mixture दोनों है, okay? Intermediate नहीं है. Red color के भी patches है, white color के भी patches है. Thus, both traits are expressed equally. So after inbreeding, okay, in F2 generation, cell pollination in plants, here we say inbreeding in animals. The roan hybrid produce three types of cattle, red, roan and white in 1:2:1 ratio. So this is best example for codominance. So this is a state textbook ka example. So in CBSE it is not given, but NET mein definitely they will ask. Okay, so phenotypically, genotypically, the ratio is 1:2:1. Now, different types of red blood cells determine the blood group ABO in human beings. So that is also example. ABO blood groups are controlled by a single gene, that is capital I. Okay, usko hum label kiya capital I. So the gene I has three alleles. We know alleles, alternative forms of same gene, capital IA, capital IB, and small I. Yeah, in certain textbook, capital IO, you can write O also. The allele capital IA and capital IB produce slightly different form of the sugar on the RBC, and that sugar is a glycoprotein. NCERT में, CBSE में question they will ask. So allele I does small I does not produce any sugar. A is produce different sugar and B will produce a different sugar. Okay. So allele small I does not produce any sugar. Now see here. So here you can observe a phenotype. The blood group A, O, A, B, AB. Now see the genotype of blood group O, small I, small I. See the RBC surface does not contain any glycoprotein. Then blood group A, it has two types of genotypes, homozygous IA and heterozygous IA small I. What it indicates? Capital A, that is blood group A, is dominant over blood group O. So you can see here the yellow color glycoprotein is there. Then blood group B, IB homozygous or IB small I. तो ये क्या दर्शाता है? That is blood group B is dominant over blood group O. Now you can see here again the glycoprotein spherically दिखाया गया indication, that is glycoprotein sugar. But when they come together, AB, you can see IA, IB, they are not dominant, they are codominant. And you can see the sugar is equally produced on the surface of RBC. Okay. Now, so capital IA and capital IB are completely dominant over small I, that is blood group O. When IA and small I are present, only IA will express, that is definitely the blood group will be A. When IB and small I are present, only IB will express. So इधर तो law of dominance applicable है, लागू होता है.
But when capital IA and IB are present together, जब दोनों एक साथ आते हैं, so they both express, वो दोनों भी express करते हैं their own type of sugar, 50-50%. And therefore, such interaction here we call codominance. उसी को हम बोलेंगे codominance. Hence, the red blood cells have both A and B types of sugar. A and B types of sugar. Okay. Now, third one is multiple alleles. Incomplete dominance, codominance. Abhi third, multiple alleles. Three alleles governing the same character. Three alleles hai, एक ही character, that is multiple alleles. Multiple alleles can be found only when population studies, not individual. जब पूरा population में हम study करते हैं तभी ये लागू होता है. Example again, ABO blood group is the best example. ABO blood group was first time discovered by 9th में 11th में पढ़ा है. Landsteiner discovered of blood group, and the fourth group AB was discovered by D. Castellio and Steiner. See, again, if there is a blood group O, so these are the possible genotypes. ये दोनों, B ये दोनों, बस इतना याद रखो. You will get it. Homozygous for blood group A, heterozygous for blood group A. ये शब्द आएंगे. Capital IA homozygous, capital IA, capital IO, yeah, as I told you, small I, heterozygous. Now इधर दिया है पेरेंट्स देखो, अगर ये पेरेंट्स के ग्रुप है तो ब्लड ग्रुप इन प्रोजेनी आने वाले पीढ़ी में ये होगा. इनका ये देखो इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल ब्लड ग्रुप है. यानी अगर फादर और मदर दोनों ब्लड ग्रुप ओ है, उनका पूरा प्रोजेनी ओ ही होगा. देयर इज नो ए, देयर इज नो बी, देयर इज नो ए बी. इसी को हम जेनेटिक कुंडली बोलते हैं. ओके, ये देख लो, आपको समझ में आएगा. पॉज, वीडियो पॉज करके स्टडी करना. नाउ प्लियोट्रॉफिक. ओके, अभी इधर मल्टीपल एलील्स का मतलब दिस इज, दैट इज I gene produce 3 या 4 blood groups. That is blood group A, blood group B, blood group AB और blood group O. So that is called as multiple alleles. Okay, ऐसा. Pleiotropic genes या pleiotropic expression ऐसा भी आप बोल सकते हैं. Okay, now the ability of a gene to have multiple phenotypic effects. एक ही जीन है लेकिन मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट्स अलग अलग होते हैं. मल्टीपल एलील्स में मेनी एलील्स. ओके, द जीन हैविंग मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट, उसको हम बोलेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन, एंड दे आर टुगेदर कॉल्ड सिंड्रोम. पर डिसीज के जगह पर सिंड्रोम वी कॉल. वी नो व्हाट इज अ सिंड्रोम, ग्रुप ऑफ डिसीजेस. Example, cystic fibrosis, Marfan syndrome, या phenylketonuria. These are the best example of pleiotropic effects. In human beings, pleiotropy is also exhibited by sickle cell anemia in heterozygous condition. Now see the allele here, yeah, genes. HB is a gene, HBA and HBS. So 2 alleles. Normal या healthy gene HBA is dominant over sickle cell anemia gene, that is HBS. तो HBA is dominant और HBS is recessive हम बोल सकते हैं. The homozygous condition of sickle cell anemia gene is fatal and person will die, very dangerous. अगर HBS दोनों genes आते हैं, so definitely he will die. Now, if you take an example, इधर अगर आप example लेंगे, so parents, one is sickle cell carrier. अभी carrier यानी heterozygous आ जाता है, that is HBA, HBS. Got married with another sickle cell carrier. Carrier है, यानी they are not phenotypically sickle cell anemia, but genotypically वो carrier है. तो
अब ये हेट्रोजाइगस है तो one gamete is HBA, another gamete is HBS, that is 50-50%. Similar, again use the Punnett square and see the possible. अगर HBA आ गया normal progeny, then HBS आ गया it will die because both are homozygous recessive. लेकिन HBS, so there are two carriers, so disease will carry to the next generation. Okay, so the ये कैसे होता है? If you see here, this is a normal RBC. अगर इसको आप देखेंगे ये normal RBC है. Why the RBC is normal? Because normal hemoglobin ये gene है and the sequence is CTC GAG DNA that we will study with detail in next chapter, molecular basis of inheritance. So mRNA will be GAG. Okay, ये कैसे आता है? We'll study that one. Then see, this is the sequence of polypeptide chain HBA. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We are very concentrating on the 6th amino acid, and that is GLU, glutamine. Now, अगर ये इधर चेंज हो जाता है, see CTC के जगह पर अगर ये, and then opposite उसका T रहता है. So if there is a mutation, तो mRNA also change. तो in place of GAG, A के जगह पर इधर U replace हो जाता है, that is mutation हो गया. अगर U replace हो गया तो 6th पोजीशन देखो, remaining amino acids are same, लेकिन अगर आप 6th का देखेंगे उधर वो ग्लूटामाइन के जगह पर वेलेनाइन आ गया है. So the polypeptide chain change हो जाती है. Then the structure of RBC, the structure of hemoglobin will get modified and the cell shape will change. इसी को नाम दिया sickle cell, sickle shape आएगा. Okay, so this is HBS peptide and this is HBA peptide. ध्यान रखेंगे 6th position. क्यों ये वेलेनाइन आ गया? क्योंकि A के जगह पर U आ गया, बस इतना है. So polygenic उसमें quantitative inheritance. Quantitative. In this inheritance, the characters are controlled by 2 or more genes in which dominant allele have a cumulative or additive effect. जैसे जैसे genes combined होते हैं उसका effect अलग अलग होता है. Dominant allele express a part or unit of the trait and the full trait being shown only when all are present in dominant. Okay, that is cumulative. अगर example इधर लेंगे, kernel, color in wheat, या cob length in maize, या skin color in human beings, या height in humans, all are examples of polygenic inheritance. Poly, many genes. Now, we will try to understand the skin color. United States of America by C.B. Davenport in 1913 is studied. In USA, the marriage between the black and white individuals, commonly called black or white people, has resulted in a population known as mulattoes. In between आ गया. The woman's skin color is caused by a pigment melanin. We know that MSH, melanocyte stimulating hormone. The quantity of melanin is due to 3 pair of polygenic genes. 3 genes, A capital, B capital, C capital. And they have a intermediate skin color in the first generation. Okay, intermediate skin color in the first generation. When the mulattoes marry among themselves, white और black के बीच में तैयार हुआ mulattoes. और अगर ये mulattoes आगे जाके मैरिज करते हैं, all shades of skin colors are obtained. Gradient मिलेगा, quality मिलेगी. So the genotype of black and white persons will be, देखो यहाँ पे, अगर capital A, B, B, C है, very dark या black. Small a, small b, small c है, that is very white respectively. ये हुआ pure. Now the genotype of mulattoes दोनों का combination, that is capital A is dominant over small a, तो heterozygous मिलेगा. Capital A small a, capital B small b, capital C small c. Okay, now see here, parent अगर ये है
ओके, वेरी लाइट पेरेंट, सो वेरी डार्क, अभी देखो इधर दिखा है पेयर में, सो दिस इज मुलैटो या मुलैटोस, इंटरमीडिएट कैरेक्टर. सो इफ दीज मुलैटोस आर गेट मैरी, देखो यहाँ पे, सो आउट ऑफ 64 प्रोजेनी मिलेंगे. क्यों इधर मिलेंगे 64? 1 2 3. ओके, तो 3 के अगर आप करेंगे यू विल गेट 8 गैमेट्स, 8 टाइप्स ऑफ गैमेट, and 8 into 8 64. So capital small a, b, 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 small c, c. Out of 64 1 very light and very dark 64 में से एक मिलेगा. But you see very dark brown 6 मिलेंगे, dark brown 15 मिलेंगे, and mulattoes 20. Then light brown 15, very light brown 6 chances. So this is the F2 generation. Okay, इतना डिटेल से कैसे आए यू आर नॉट टू स्टडी, बट यू सी दैट ए ग्राफ, इधर देखो यू कैन डू दैट. सी ये कैसे कैसे गैमेट्स आ गए. ओके, इसमें से 3 लेना है. दैट इज इफ आई एक्सप्लेन हियर हाउ दैट गैमेट्स विल प्रोड्यूस. सो द फर्स्ट गैमेट विल बी, अगर इधर आप लिखेंगे द फर्स्ट गैमेट विल बी कैपिटल ये पहला, देन कैपिटल बी और कैपिटल सी. सो ये ऐसा और ये. अभी दूसरा क्या होगा? सो दिस विल बी देयर कैपिटल ए, कैपिटल बी, एंड देन इट विल गो टू द स्मॉल सी. सो व्हाट इज द सेकंड गैमेट हियर? कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल सी. ये पहला कॉम्बिनेशन. अभी इधर कैपिटल ए ही रखेंगे हम, देन कैपिटल, अभी बी का तो हो गया. ओके, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी या स्मॉल सी. अभी आप लेंगे इधर स्मॉल बी का, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, या कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी. सो 4, जैसे इसके 4 स्मॉल ए के 4 होंगे, तो 4 4 8. सिमिलरली हियर, नाउ यू कैन सी हियर ए कंप्लीट पैराबोला. आपको एक पैराबोला मिलेगा या ऐसा यू विल गेट. सो स्किन पिगमेंटेशन, सो दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट. सो इधर दैट इज वेरी लाइट, इधर वेरी डार्क, एंड मोस्ट ऑफ देम आर इंटरमीडिएट. 20 आर इंटरमीडिएट, 15 मैंने बताया क्या, 6 मैंने बताया क्या, 1 क्या मैंने बताया. सो फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन या ऐसा. ओके, नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन? So dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information. It depends as much on the gene product and the production of particular phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine. In case the more than one phenotype is influenced by the same gene, ओके, तो क्या होगा? ये पूरा आपको मिल जाएगा. नाउ कम टू द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सो गिवन बाय दीज टू साइंटिस्ट, वाल्टर सुटान एंड थियोडोर बोहरी. The behavior of chromosome was parallel to the behavior of genes. Chromosomes as well as genes always occur in pairs. देखो मेंडल को कुछ भी मालूम नहीं था, क्रोमोसोम भी पेयर में होते, तो उन्होंने बोला फैक्टर्स में पेयर में होंगे, कैपिटल टीटी, स्मॉल टीटी. The two alleles of gene pair are located on a homologous site or homologous chromosome. That is loci. ये भी हमने दिखाया. The pairing and separation of pair of chromosome would lead to the segregation of a pair of factors they carried. तो पेयरिंग भी होमोलॉगस, तो होमोलॉगस जीन भी पेयर होते हैं. सेपरेशन भी होमोलॉगस ही होते हैं, तो जीन्स भी होमोलॉगस ही सेपरेट होते हैं. What are the possibilities here? During prophase of meiosis 1, the two chromosome pairs can align at the metaphase plate independently of each other. So you are studying in 11th standard. तो पॉसिबिलिटी 1 क्या होगा? आई विल शो द डायग्राम. ऑरेंज एंड ग्रीन जो क्रोमोसोम कलर है, दे सेग्रीगेटिंग टुगेदर. और पॉसिबिलिटी 2 में क्या होगा? द ऑरेंज क्रोमोसोम इज सेग्रीगेटिंग विद द रेड क्रोमोसोम. तो ऑरेंज एक बार ग्रीन के साथ सेग्रीगेट होगा और एक बार रेड के साथ सेग्रीगेट होगा. नाउ सी हियर, पॉसिबिलिटी 1,
the one long orange and short green chromosome and one long yellow and short red chromosome at the same pole. So here you can see, and here the germ cell, see the orange with green, yeah, yellow with red. And second possibility देखो यहाँ पे meiosis 1 anaphase में see. Okay, so this is the orange and short red and long yellow with a short green. So here these are the possibilities. So ये law of segregation है. So always there is a 50-50% chance. Now you follow that with the diagram what you have studied. So that is law of segregation. The two alleles of each gene separate during the gamete formation. Or the third law what you have studied, the law of independent assortment. The alleles of the genes are non-homologous chromosomes, non-homologous, which are not similar in the structure. Assert independently, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, किसी के साथ भी एक्सप्रेस हो सकते हैं during the gamete formation. So therefore there are, see, 1/4 of the gamete is capital YR, अगर आप round और yellow लेंगे, and small yr या capital Y small r या small y capital R. So dihybrid cross, we get a different 4 types of gametes. Okay, so that is what we are studying. Now, what the chromosomal theory of inheritance says? They noted that the behavior of chromosome is parallel to behavior of Mendelian factors. या आजकल हम क्या बोलते हैं? Genes बोलते हैं. Now, what are the silent features of this theory? Like the hereditary traits, the chromosome retain their number, structure and individuality throughout the life. आपके पेरेंट के शरीर में भी 23 पेयर है, आपके शरीर में भी 23 है, आने वाले पीढ़ी में भी 23 पेयर क्रोमोसोम होंगे. They maintain, but उसमें वेरिएशन आते जाता है, not in the number. The two neither get lost या nor mixed up. ना क्रोमोसोम लॉस होंगे, ना जीन या मिक्स होंगे. अगर हो गया, नंबर में कम ज्यादा हो गया, जीन्स में कम ज्यादा हो गया, so that we call variation या mutation. Both chromosomes as well as genes occur in pairs in the somatic or what you call vegetative cell या all somatic cells in human beings are diploid. 2n number, ये पढ़ा आप लोगों ने. But a gamete contains only one chromosome of a type and only one of the two alleles. अगर कैपिटल टी 2 है तो उसमें से एक कैपिटल टी, या कैपिटल टी और स्मॉल टी है हेट्रोजाइगस में तो आइदर कैपिटल टी या आइदर स्मॉल टी, तो ऐसा. So that is one of the pair, means haploid. So the paired condition of both chromosomes as well as the Mendelian factors restored during fertilization, क्योंकि haploid number carry sperm, haploid number carry egg या पोलन ग्रेन और ओवल आपने पढ़ा है. So haploid mixed together again become diploid. Okay, तो diploid condition restore हो जाता है. So during that ये दो concept आ गए, linkage and crossing over. So the tendency of genes or a characters to be inherited together, हमेशा वो एक साथ रहते, सभी नहीं, because of their location on the same chromosome, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है और दोनों बहुत ही क्लोज है, फिजिकल कांटेक्ट है. So that linked genes is called as linkage. The result of certain dihybrid crosses, जो 9:3:3:1 था, did not confirm the law of independent assortment. इसीलिए out of 3 law, law of dominance, law of segregation, law of independent assortment में से एक ही यूनिवर्सल है, कौन सा? law of segregation. बाकी ये लागू नहीं होते. law of dominance हमने देखा, incomplete dominance, co-dominance. ओके, और इधर हम अभी लिंकेज के वजह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी वो रेशियो नहीं आता है जो 9:3:3:1 आना चाहिए.
So the number of linkage group in human being is 23. तो अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग लिंकेज ग्रुप होते, थोड़ा रेफरेंस वगैरह देख लो, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ टाइप्स ऑफ लिंकेज. कंप्लीट लिंकेज, when genes were very tightly linked and grouped on the same chromosome. तो जो नया रिकॉम्बिनेशन है वो बहुत ही कम मिलता है, लो रिकॉम्बिनेशन. ऐसे लिंकेज को हम बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज. इनकम्प्लीट लिंकेज, when the genes were loosely linked, थोड़ा थोड़ा दूर है, तो कॉम्बिनेशन 0 से बढ़ने लगता है, 1%, 2%, 3%. So that is higher recombination. So Jonathan, we know that he coined the term gene for the Mendelian factor. Already हमने discussion किया है. So the transmission of characters from parent to offsprings, okay, with sex chromosome is called as sex-linked inheritance. वो आगे आपको आएगा, sex-linked inheritance. तो उसमें भी दो है, incomplete sex linkage, that is located on homologous region of X and Y and do not inherit together. कभी XY ऐसा. एग्जाम्पल टोटल कलर ब्लाइंडनेस है, रेटिनिटिस पिगमेंटोसा और नेफ्रिटिस, ये सभी इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज है. कंप्लीट में सेक्स लिंकेज लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन. सी ऊपर क्या है, होमोलॉगस, अभी इधर क्या है, नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ द एक्स एंड वाई. और ये इनहेरिट टुगेदर, ऊपर वाले डू नॉट इनहेरिट टुगेदर, ये डिफरेंस है. बेस्ट एग्जांपल देखो, ऊपर है टोटल कलर ब्लाइंडनेस, इधर रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस. सम पीपल्स कैन नॉट रिकॉग्नाइज कौन सा रेड है कौन सा ग्रीन कलर है. या हीमोफीलिया या मायोपिया, you studied in your physics class. So T.H. Morgan is the first person to give a experimental proof, and therefore he is referred as the father of experimental genetics, and he discovered the basis for the variation. You can see him, a wide type Drosophila और a mutant red eye है, इधर white eye. देन जैसे गार्डन पी मेंडल ने लिया वैसे इन्होंने फ्रूट फ्लाई लिया. क्वेश्चन आएगा व्हाई फ्रूट फ्लाई. ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर साइंटिफिक नेम, इजीली रियर्ड इन ए बॉटल एंड ब्रीड अंडर लैबोरेटरी कंडीशन. इसको बड़ा खेत नहीं चाहिए, वेरी वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन, अबाउट ओनली 2 वीक. गार्डन पी को तो मिनिमम 4 या मैक्सिमम 6 महीने लगते हैं. सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, वो एक 300 के ऊपर यक देता है. फीमेल्स और मेल में हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. फीमेल्स आर लार्जर बॉडी साइज एंड प्रेजेंस ऑफ ओविपोजिटर, दैट इज एग लेइंग कैपेसिटी, एंड दे हैव 2XX क्रोमोसोम. मेल दिखने में, ये डायग्राम आप देख सकते हो ऊपर जो मैं दिखा रहा हूं, मेल दिखने में स्मॉल है एंड दे आर हेट्रोमॉर्फिक and XY sex chromosome. So shows a number of externally visible character, बहुत सारे characters which are easily identifiable. जैसे गार्डन पी में हाइट था, टॉल और डॉर्फ, सीड कलर था येलो और ग्रीन, राउंड शेप सीड का, ऐसे इधर भी बहुत सारे. So smaller number of chroma, 4 pairs, उधर तो आपको मिल रहे थे अराउंड 14, that is 7 pair garden pea में. So ये कारण है कि why he selected this insect fruit fly. Now see, when he did a cross between the yellow white parent with a wide type, in cross A, see the combination. The parental type is 98.7% और जो recombinant type है it is 1.3%. लेकिन वही जब उन्होंने दूसरा क्रॉस किया बाय चेंजिंग द कैरेक्टर, दैट इज व्हाइट और मिनिएचर, इधर क्या है येलो व्हाइट है, इधर व्हाइट मिनिएचर है, स्मॉल विंग और व्हाइट टाइप सेम है. तो हियर ही यूज द सिंबल प्लस, प्लस इंडिकेट्स डोमिनेंट, माइनस इंडिकेट या नो सिंबल इंडिकेट रिसेसिव. सो हियर व्हाट ही गॉट, सी पेरेंटल उसको मिला 62, इधर से कम, लेकिन रिकॉम्बिनेशन मिला ज्यादा, कितना
37.2%. तो व्हाट यू कंक्लूड, अभी इधर देखो एक क्रोमोसोम दिखा है, सी स्मॉल वाई डब्ल्यू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दोनों बहुत ही नजदीक है, कंपेयर टू द डब्ल्यू एंड एम, डब्ल्यू और एम दोनों दूर है। ओके तो इधर डब्ल्यू के साथ कंपैरिजन हो रहा, व्हाइट के साथ मिनिएचर, व्हाइट के साथ येलो। If you compare that, so here there is a more chance of linkage than here less chance. तो लिंकेज ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा। ओके मोर इज द लिंकेज, लेस इज द रिकॉम्बिनेशन, मोर इज द लिंकेज, हाँ लेस रिकॉम्बिनेशन, लेस इज द लिंकेज, मोर इज द कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन। तो जितना जीन्स नजदीक है दोनों उतना रिकॉम्बिनेशन कम आता है, जितने वो दूर होंगे उतना रिकॉम्बिनेशन ज्यादा आता है। क्यों? क्रॉसिंग ओवर पढ़ा है। ओके नाउ सो द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज यहाँ पे देख सकते हैं, बिटवीन Y and W is higher than W and M. So Y and W are more linked genes compared to W and M. So cross A, उसी का अभी explanation, crossing of yellow bodied Y with white eyed, that is W females, with brown body Y plus, that is dominant, with red eye, that is dominant male plus sign, produce brown bodied red eyed in F1 generation. Again it indicates law of dominance. But he found that 98.7% parental combination in F2 generation and 1.3% recombination. Okay, ये पहले क्रॉस। वही दूसरे क्रॉस में क्या मिला? क्रॉस बिटवीन व्हाइट आइड एंड मिनिएचर विंग्ड W, फीमेल विथ रेड आइड नॉर्मल विंग, अगेन कैपिटल। F1 में क्या मिला? ऑल वेर फाउंड व्हाइट टाइप, अगेन लॉ ऑफ डोमिनेंस इधर एप्लीकेबल है। But in F2, so when this F1 fly test cross with a white-eyed miniature winged male, he found 62.8% parental combination and 37.2% recombinant. तो इधर recombinant बढ़ गया क्योंकि दोनों जीन्स अलग-अलग जगह पर है। So crossing over आ गया। What is crossing over? Again 11. The process which produce recombination of genes by interchanging the corresponding segment between the non-sister chromatids of homologous chromosomes. 11th याद करो, एक ही क्रोमोसोम्स के दो क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड्स, अभी दो क्रोमोसोम है ए और बी, तो ये दोनों क्या हो गए? नॉन सिस्टर। इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है, नॉन सिस्टर, ये इसके साथ या इसके साथ, whatever it is. It takes place in पैचिटिन स्टेज, मैंने बोला था लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डाइप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है? पैचिटिन स्टेज में ऑफ ए प्रोफेज 1, वही डिसाइड करता है। क्रॉसिंग ओवर occurs between the non-sister chromatids of paired chromosome in the region of चाइस्मा या काइस्मेटा। याद करो सभी, 11वीं 11th सब कुछ आपको याद होगा। So therefore there is a chance of 4 types of gametes are obtained, और मेंडल में वही हुआ, डायब्रिड क्रॉस में 4 gametes। देखो कितना इंटेलिजेंट था मेंडल। तो देन एक जीन मैपिंग कंसेप्ट आ गया। व्हाट इज जीन मैपिंग? द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लोकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ जीन्स and the relative distance between linked genes of a chromosome is called linkage or genetic map. मैप बोलते हैं ना, जैसे गूगल मैप कि where is a न्यू दिल्ली, तो where from you मेजर कि कौन से कहां, वैसे इधर which gene is present on which chromosome, और दो जीन, दो गांव कितने नजदीक है, दो घर कितने नजदीक है, वैसे जीन्स are arranged linear on chromosome, linearly on एक के नीचे एक है। So Alfred Sturtevant used the frequency of recombination, जो recombination का frequency मिला, that is 1%, for example, gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between the genes
और उन्होंने बोला जीन मैप। अगर 1% है रिकॉम्बिनेशन तो 2 जीन के बीच में डिस्टेंस 1 जेनेटिक मैप है। अगर 5% मिला रिकॉम्बिनेशन 5 जीन मैप है। ऐसा द यूनिट ऑफ जेनेटिक मैप उन्होंने CM स्मॉल c कैपिटल M दैट इंडिकेट्स सेंटीमीटर नहीं सेंटीमॉर्गन, क्योंकि वो स्टूडेंट है मॉर्गन का, तो उन्होंने अपने गाइड का ही नाम दे दिया। Percentage of crossing over between the 2 linked gene is 1%, then the map distance between the linked genes is 1 centimorgan। यहाँ पे देखो अभी A और B के बीच में 50 मॉर्गन, B और C के बीच में 25 मॉर्गन, C और D के बीच में 5 मॉर्गन और D और E के बीच में 20 मॉर्गन। तो which genes are linked here? बता सकते हैं सबसे लिंक्ड कौन है? C और D। उसके बाद D और E। C और E नहीं, C और B भी नहीं, वो बाद में आएंगे। और ये और E के बीच में तो देखो ये ऐड करो A और E, व्हाट इज द डिस्टेंस? 50 + 25 + 5 + 20, सो दैट इज द जेनेटिक मैप बिटवीन A एंड E। तो ज्यादा चांसेस है क्रॉसिंग ओवर होने का, ज्यादा रिकॉम्बिनेशन मिलेगा कंपेयर टू C और D। Okay, so this is about second session. So again keep watching my YouTube channel for a next part 3 of this principle of inheritance. Okay friends, so thank you for watching my YouTube channel and keep subscribing. Thank you one and all.